Yes, sir, audible. Yes, sir. Mm-hmm. Audible or not in that. Just please check Yes, that. sir, I'm checking. Yeah. Well, at least they finally killed that couple. I was sure they made it out of the city. Steel Now all we strips need to white find is the tee. fucking pickup truck duo. Yeah, there better been an army in that truck. How the fuck did they wipe out the entire crew over there? Whoa! हाँ सर, दोनों का वॉइस आ रहा है किसका? आपका भी है ना? को player. That. ओके गाइस, तुम लोगों का जो भी डाउट है तुम यहाँ पे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शंस में एंड सर उसका रिप्लाई दे देंगे. Well, at least they finally killed that couple. As you can I see, was the sure they made worst it out of the gameplay city. ever. Now all we need to find is this fucking pickup truck duo. Yeah, there better been an army in that truck. How the fuck did they wipe out the entire crew over there? Let's keep searching. I want to wrap this up before sundown. Hey, you see anything over there? Hello? Hey, dude. This is bad. Is my voice not clear? Talk. Dhanush, just You're let so me scared check. of us. I think my Try voice. not to let. First, let me check. If it is, I'm just so I'll saying, edit that part. it's good having Just you check on my now. side. That was a compliment. Okay. Check my voice. Is that okay? I think I have edited. Let me check my mic settings. What's up? Please check. Is my voice is not that clear? I think Dhanush is saying it is. There is an issue. I think it works right now. Just please go एक्चुअली सर through. कभी कभी थोड़ा सा जिटर हो जा रहा है साउंड में. जिटर हो रहा है. Okay, अभी नहीं हो सकता है. I think so. पास ले आया. अभी चेक करो. I think this would works this time. I need to figure it out. Crystal clear. Okay. Got it. So, yeah. जिसका भी क्वेश्चन है, आई थिंक स्टार्ट करो यहाँ पर. आई थिंक रेज हिटमैन सर, व्हाट विल कम इन एग्जाम टुमारो. हाँ, बताऊंगा ना. थोड़ा जस्ट होल्ड फॉर दैट क्वेश्चन. अभी बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप. कल का देखो कंप्लीटली बहुत बहुत इजी पेपर है, लेकिन वो सभी के लिए इजी या नहीं वो मैं बताऊंगा धीरे से. What about Marcus? I pray to God these tourists show their face. They gotta show up somewhere. I think this will be your lucky day. Joel, there's a guy up on that second floor, right there. Yeah, I see him. Stay low. क्या एग्जैक्ट थियोरी एंड कॉन्सेप्ट्स आएंगे या गेम के बेसिक्स पे ही होगा. या
सी एवरीवन फर्स्ट आप ये समझ में आना है everyone right before actually making a game the reason why we are here is that observing a game studying the game ये चीज आपको आना बहुत ही important है Yeah. right game बनाना is secondary first of all at least you need to understand like how to study the gameplay Appreciate it. right गेम के अंदर कैसे हम लोग देखो आपने एक मूवी देखते हो मूवी के हिसाब से आपने कैसे कैलकुलेट करते हो कि फॉर एग्जांपल मैंने मूवी का कैमरा अच्छा है राइट मूवी का क्या बोलते हैं उसको एक्टर अच्छा है डांस अच्छा है स्टोरी अच्छा है ऐसे डिफरेंट एरियाज के अंदर कैलकुलेट करके आपने कोशिश करते हैं कि किसी मूवी को स्टडी करना उसके अंदर किस काइंड ऑफ एलिमेंट्स होगा वो क्या क्या चीजें होंगे उसके अंदर ताकि आप जज कर पाओगे सही या गलत एट द सेम टाइम आप ये भी कर सकते हो कि उस कंटेंट के अंदर कि वो क्या बोलते हैं इज दैट राइट मूवी टू मैंने वो मूवी देख सकता हूँ या नहीं मैंने सेम ऑप्शन फॉर गेमिंग पार्ट टू राइट इट डजंट मैटर व्हाट काइंड ऑफ गेम यू मेक बट द लैंग्वेज इज द सेम इट डजंट मैटर व्हाट काइंड ऑफ फंक्शनैलिटी यू डेवलप the theory is only the same इसलिए आपको एक नाम बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो है स्टडी द गेम गेम स्टडी करना बहुत तो कैसे स्टडी करेंगे गेम को कैसे स्टार्ट करेंगे स्टडी करेंगे दैट इज तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर हम लोग देख चुके हैं कि आपका जो गेम का जो स्टडी है मेडिटेशन को गेम को ब्रेक डाउन करते हुए राइट तो वैसे हम लोग कोई गेम को सर आपका वॉइस सुनाई नहीं दे रहा पूरा जिटर हो रहा है अभी भी Okay, let me hold on. उधर क्लियर है अभी राइट ओके हो सकता है करो अभी इट इज क्लियर लेट मी नो अब ठीक है सर अब ठीक है राइट या थोड़ा सा या हाँ तो पहले हम लोग क्या क्या पढ़े थे आइडिया पढ़े थे कैसे कॉन्सेप्ट स्क्रीन करना राइट गेम का कॉन्सेप्ट कैसे होगा गेम कॉन्सेप्ट को हम लोग कैसे गेम में ब्रेक डाउन करेंगे राइट इस चीज को वो क्या बोलते हैं वो कैसे ऑब्जर्व करते हैं वो सारे हम लोग देख चुके राइट वी हैव गॉन थ्रू गेम मैकेनिक्स क्या होता है राइट गेम मैकेनिक्स बोल के हम लोग पढ़ चुके थे वो फर्स्ट पर्सन शूटर गेम प्ले के लो आप कैंडी क्रश के लो राइट और you're playing any kind of online या offline या mobile या PC or any console any kind of game you play game mechanics as a similar definition right तो किसको mechanics बोलते हैं for example when it comes to यहाँ पर देखो बहुत सारे मैकेनिकल कॉम्बिनेशंस पे आपको गेम प्ले हो रहे हैं राइट तो क्या क्या मैकेनिक्स है तो एक बार ऑब्जर्व करो as the player is walking as the player doing the actions as the player interacting the enemies and lot of things combinations यहाँ पर हम लोग को बोल सकते हैं ये गेम का मैकेनिज्म्स है तो उसको ब्रेक डाउन करो for example I'm going to attack him right I'm trying to tackle him in a stealth mode without any using any weapons here तो what happening here वो भी एक separate mechanism है मैंने बता रहा हूँ तो उस mechanism में क्या हो रहा है
if the player can able to tackle any enemy without noise, so that उसका result क्या होगा, we are gonna clear the particular opponent, at the same time हमको reinforcement call नहीं करवाएंगे, right? और उसी के साथ ये भी important है कि गेम प्ले के अंदर वो बिलीवेबिलिटी है, ताकि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कुछ भी करो उसको लोग गेम प्ले बोलते, गेम मैकेनिज्म बोलते, नहीं, बेस्ड ऑन सर्टेन गेम प्ले वेयर प्लेयर नीड टू मूव फॉरवर्ड एंड इन योर सर्वाइव एज राइट सर्वाइव करते हुए जो फिर से कट गया साउंड। सर अब तो कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा। सर अपना स्ट्रीमिंग के बीट रेट को थोड़ा सा लो कर दो। यस अब नहीं होगा गैस, आई थिंक विदाउट चार्जिंग आप गेम खेलते हो तो अगेन ये चीज होता है, ये चीज आपको समझना है। आई थिंक आई फॉरगॉट टू पुट द चार्जर स्विच ऑन, राइट? तो यस, आई थिंक नाउ एवरीथिंग विल वर्क फाइन, है ना? यस साहिल, यू सेड राइट, या सीपीयू स्ट्रगल कर रहा है क्योंकि मैंने चार्जिंग पिन चालू नहीं किया, राइट? नाउ इट्स कंप्लीटली विल बी क्लियर, राइट? यस। सो हम लोग कहाँ पढ़ते हैं? हम लोग कोशिश करेंगे, विल गेट बैक टू दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट। तो यहाँ पर प्लेयर वॉक कर रहा है, क्राउच कर रहा है, राइट? एंड प्लेयर मूव कर रहा है, राइट? एंड लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग हियर। एंड इस प्रोसेस के अंदर, राइट, यहाँ पर एक एक्शन से अगर प्लेयर भागते हुए जा रहा है गेम को फिनिश करने में, वेयर देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट एट ऑल, ऑब्वियसली वहां पर
गेम बिलीवेबिलिटी नहीं होगा ताकि someone should stop him and how the player को कौन कब कैसे रुका सकते हैं गेम के बिलीवेबिलिटी के हिसाब से दिस इज कम्प्लीटली a post apocalyptic world where a lot of things can stop a player to move or survive in the gameplay. तो उसके लिए there are few elements that they have been picked here and उसको as a mechanism convert करके gameplay wise game actions को create करके यहाँ पर they have been placed here, right? तो see here, I can hear this sound when someone is trying to detect me. अगर मैंने साइड में ऐसे चला गया तो कोई मेरे तरह से देखता है तो एक obviously एक vibrating sound आपको मिलने को मिलेगा and that is also a part of a game mechanism. If there is no detection meter in any form, obviously gameplay experience को lag करता है because उतना दूर से आदमी का ह्यूमन का विजन के हिसाब से वो आसानी से देखना चाहिए तो वो बिलीवेबिलिटी लाने के लिए दे ट्राई टू फिगर इट आउट हाउ टू मेक द गेम प्ले वर्क. आई एम शूटिंग समवन एंड वो उसको अगर कुछ भी नहीं हुआ अगेन देयर इज अ प्रॉब्लम व्हेन आई शूट वो गिर गया मतलब अगेन शूटिंग मैकेनिज्म. इफ आई शूट अगेन ही डाइड, right? Shooting mechanism again comes under the player mechanism here, right? So I have a brick here. नीचे brick है. I need to press E to pick up a brick, and I need to throw the brick to distract any enemy. Is also another sort of mechanism, right? So हर चीज का जो हर action का जो outcome मिलता है and that outcome has an impact in the gameplay is completely a mechanism. बहुत अलग अलग तरीके से आपको मैकेनिज्म मिलेगा. फॉर एग्जांपल ही हैज अ लूट ऑप्शन. यहाँ पर बैग है, बैग के अंदर यहाँ पर लूट भी ले सकते हैं प्लेयर ने और लूट इन द सेंस लाइक मे बी द वेपन्स, मे बी द गियर टू अपग्रेड ए वेपन, मे बी सम मेडिकेशन, ऑल दिस वो लूट लेके उसको इस्तेमाल भी कर सके. फॉर एग्जांपल आई पिक्ड अप ए मेडिक्विट एंड आई आल्सो यूज दैट मेडिक्विट टू हील माई सेल्फ. वो एक सेपरेट मैकेनिज्म है. तो ऐसे छोटे छोटे चीजें बहुत सारे स्टडी आपको करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड द गेम प्ले. फॉरगेट अबाउट विच काइंड ऑफ गेम प्ले. आप ऐसा मत सोचो कि सर मैं इस टाइप ऑफ गेम्स नहीं खेलता, आई डोंट प्ले दिस काइंड्स ऑफ गेम्स और आई डोंट like this kinds of games. It doesn't matter. Game language is completely the same. That thing you need to focus on. That is what I'm trying to concentrate here, right? And second, when you understand the what are the gameplay mechanism is, एक चीज गेम को फंक्शनैलिटी पे रखने के लिए एक और चीज अपने को हेल्प करेगा वो है गेम रूल्स, राइट? तो फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम डूइंग नथिंग तो आइदर प्लेयर won't move forward, there won't be any progression for the gameplay, or there is another way. अगर मैं कुछ भी नहीं करता तो प्लेयर प्रोग्रेस नहीं करेगा. एक और चीज क्या है Guess this is how it ended कि for this zone. यहाँ पर प्लेयर का डेथ भी होगा if I don't follow the rules, right? तो एनवायरमेंट में बहुत सारे कम्युनिकेशन होते हैं through the UI, through the voice, through the characters like this, or through any textures, right? हर चीज से गेम प्ले को कम्युनिकेट करना है प्लेयर को. कहां से कहां तक जाना है, कैसे जाना है, किधर जाना है, राइट? क्या करना है. द गोल इज आल्सो द पार्ट ऑफ द रूल. इफ देयर इज a goal in a gameplay, that means you have a rule over there. You are restricting the player to move to at a certain location at certain point. Again, वो भी another kind of a mechanism here. Because that has an impact. Player एक पोजीशन से दूसरा पोजीशन चेंज कर रहा है, right? And here you are taking a help of another character. Again, the gameplay mechanism, right? Without that particular help, if अगर आप कोई भी चीज आप कर सकते हो तो वहां पर again action है, open action flow. तो every minute thing observation के अंदर आपको डालना important है, you know? Whatever I am talking right now, everything is connected for the game study,
राइट सी मैंने यहाँ पर आ गया एंड द कैमरा यहाँ पर मुझे एक कॉर्नर पे एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन आया था एक्स प्रेस एक्स टू लुक एट तो व्हेन आई लुक्ड एट इट इज सेइंग लाइक वेयर आई नीड टू गो और व्हाट्स हैपनिंग एट दैट पर्टिकुलर लोकेशन कुछ भी एक सिनेमैटिक वे में मुझे एक कम्युनिकेट करने के लिए एनवायरनमेंट में कोशिश कर रहे हैं मिनिमलिस्टिक यूजर एक्सपीरियंस पार्ट मुझे समझ में आ गया कि अच्छा मुझे उस तरफ जाना है एंड यू कैन ऑब्जर्व दैट इस टू एरियाज के अंदर यू हैव ए ग्लोइंग पार्ट वहां पर एक लाइट ग्लोइंग आप देख सकते हो इट डजेंट मैटर आपने गॉड ऑफ वॉर केलो वॉच डॉग्स एनी ओपन वर्ल्ड थर्ड पर्सन फर्स्ट पर्सन आरपीजीज तो हर गेम्स के अंदर लेवल डिजाइन कम्युनिकेट करते हैं आपको यू कैन सी दैट यहाँ पर लाइट आपको दिख रहा है तो लाइट से आप समझ में आता है कि वहां पर आपको जाना है इंस्टेड ऑफ स्पीक करते हैं दैट इज आल्सो अ साइन गेम लैंग्वेज right and you also need to study if it is a if this game is in post apocalyptic world how the world should be जहाँ डिस्ट्रक्शंस होगा राइट जो यूजफुल जितने भी अनयूजफुल होगा चाहे वो व्हीकल्स हो ऑब्जेक्ट्स I stayed हो in a place like this, राइट back in बिल्डिंग्स the हो Boston घर community. हो एंड वो भी जो पुराने घास घास कहाँ पर भी होगा एंड क्लीन नहीं होंगे Military ये सारे preparatory माइन्यूट Yeah, एरियाज nice way आपको of saying एनवायरमेंट finish. स्टडी के अंदर लेवल डिजाइन टाइम पे हम I लोग wonder what happened चेक to all these करते हैं kids. वी आर गोइंग टू This place has स्टडी been दैट out for a good एस्पेक्ट टू stretch. They ain't kids no more. राइट Meaning they're either hunters trying to kill us or they're यस dead. सो यहाँ पर Oh, मिलिट्री yeah, प्रिपरेशन स्कूल You don't believe that. आई थिंक आई एम ओवरलैपिंग Let me द get out of this कन्वर्सेशन shit. Come on. जब स्टोरी लाइन के अंदर वो भी इम्पोर्टेंट है हाउ एंड what they are communicating sometimes a clue sometimes a path sometimes a goal can be in just like conversation part वो conversation को भी आपको समझना चाहिए Let's go through the alley. It's that fucking truck. It's alright. Just I keep can moving. hear the sound by hearing the sound I can understand something is going on Keep going. I don't know, 20? they showed us camera but we are in wrong position उस चीज से अपन को वहां पर क्या हो रहा है वो भी नहीं क्या रहा है How the hell you have 24 cans of bacon? let me move forward Military locker. I have a loot again so what's the point of picking up this loot let me show you that aspect When you making some more? Why? so let me open my You think I want backpack some? oh 1 second Man, I saved your ass from that clicker last week. I think yes and I have a your health ass died part out there. health medikit I need to upgrade or I need to, more medikits for me मुझे बहुत सारे medikits चाहिए यहाँ पर limit I have only 3 I can pick it up and to bring that here to activate that I need to upgrade you can see that यहाँ पर मुझे पाने के लिए I need 3 this part and 1 this part ये दो चीज अपने को होना चाहिए तभी एक चीज मैंने पैक को रेडी कर सकता हूँ so that I can use that medikit in the battle area at the same time आपको हर चीज को अपग्रेड करने के लिए you can say that इसके लिए आपको ये दो चाहिए और ये नहीं है अपने पास एंड इसके लिए सेपरेट so everything required something so that where I can upgrade after upgrade I can use my medikit you can see that my health is almost 70% full let me यहाँ पर healing करूँगा healing process अलग अलग गेम में अलग अलग होगा and this is Far Cry if you know and same way this thing you can see मैं बैंड डाल रहा हूँ and देखो मेरा health full हो गया there's a different stylization here now I need to get into the action part and carefully I need to go through To your left. you can see that I have I miss
मैंने गलती किया, यहाँ पर इंडिकेशन आ रहा था where there is an enemy at that particular site. And you can see different weapon actions has a different mechanism. ये भी important है. Oh, headshot. I don't remember. Headshot उतना अच्छा हुआ. So यहाँ पर वो लोग भी destruction कर रहा है and environment destruction भी हो रहा है. You can see that. And these are the hideouts. Level design का main aesthetic ये भी important है कि यहाँ पर क्यों ये है. Randomly they haven't placed that thing. Headshot. I can see यहाँ पर बहुत difficult है. I cannot stop that. As I can remember, I have. Oh my God! मेरा bomb यहीं पर throw किया. This is a different sort of mechanism again. Bomb. उससे कुछ नहीं है. अच्छा, smoking bomb. Sorry. Put a dent in that damn thing. I have add-on place so that I can move out. Right? ठीक है. तो हम लोग rules पढ़े थे. We haven't gone through rules. So in rules we have gone through like operational rules which actually drives the gameplay, constitutive rules, the logical and more probability, strategical rules, and implicit rules which if you don't follow that, obviously we know that there will be a game over or game end situation, right? अब इतने सारे rules we have gone through. यहाँ पर आप समझो कि the main rules कौन से apply हो रहा है, and for that उसके लिए क्या क्या चीजें आपको करना है, right? For example, without rule if I move forward, obviously I will die, right? And when यहाँ पर देखो वो machine hit कर रहा है bullet से, and you have a believability part here, ताकि यहाँ पर भी hit हो रहा है, smoke हो रहा है. अगर कुछ भी नहीं हुआ, in olden times games के अंदर आप देख सकते हो कि कितना graphically changes हुआ है. यहाँ पर वो improvements believability के हिसाब से important है. And who is it? Yeah, so Deadpool ये pro gamer नहीं है. अब मैं मर गया यहाँ पर, देखो. It's very difficult. Let me see. I don't have a grenade. Let me check. I think. I have no clue what to do next. I have one more option. What I can do? Check करेंगे. भागो, 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 भागो. As I can know that I'm gonna die right now. इसका कुछ ना कुछ. Ellie, cover me! I don't have lot of the loot. मेरे पास loot नहीं है where I can. Let me check truck note. Finishing velocity. Okay. Including local mountain gun. Okay, the one execution is removed. We have managed to repair it. This thing is beautiful. I have to say some. Okay. ये चीज die.
I'm going to die, I know that, but let me. Good directly this now. Ah, cinematic. They are adding tutorials here. You can see that they are adding tutorials in the loading section. Use cover to avoid turret fire. Obviously, we are covering that. While running between cover, you only have to have a short time before the gunner reacts. Cover, huh? Okay. And then a comprehensive list of gameplay adjustments. I got it. So these are the instructions and the guides. If you miss any of those things, obviously the game fails. Nope. 7. So let me go again. I think 2 or I don't know, 20? Try 25. Bullshit. Swear to God. let me quickly finish this time. 25 cans of bacon? Well, Huh. 24. And level design. In level design, 4 cans of bacon. we have gone through the next Military topic locker is in the hotel from back in open the day. part, Me and Ruben stumbled and on we've it, gone split through right down the linearity. middle. We have gone to multiple aspects, right? Branching, bottleneck. तो वो सारे level design के aspect में we have gone through, right? तो यहाँ पर you can see that I can get to that location through this window and from that window as well as we did in the last time. Obviously, we can say that we have a multiple ways, right? That's under my point where I can choose from where I need to go. And किसी को मारने के लिए also I have a multiple ways. I can, hit him with gun, What are they shooting at us with? or I can use Military him. turret, just stay down. I can hit him with a different sort of weapons also as a multiple ways. Right? तो इस बार मैं इसको पार करना ही वाला हूँ. Yeah. I have a cover. Okay. I have a timeline. ऐसे भी नहीं है enemy का difficulty AI, right? It is detecting us, our location, our rotation, our movement, and it's hitting us as we are an opponent. But एक चीज important है, it has a space, it has a delay where a player can escape from the location. अगर वो delay नहीं है, again it's uneven for the gameplay. उस delay के अंदर ही gameplay procedure आपको forward होना important है, and that is important for the gameplay. You can see that I have moved this from location to location. Oh god. You can see enemy भी बहुत different sort of AI से opponents के अंदर, and they can actually hide. They can actually oh god, hit us. If my health is low, तो मुझे क्या करना है, मेरा बैग ओपन करके I need to heal. तो उसके लिए we already mentioned this is a different sort of mechanism where the player can heal. ठीक है, अब मैंने इसको upgrade, sorry, I have added that. Now I am going to heal. Okay, you can see, observe the environment here. ये एक मुझे lab जैसा दिख रहा है, या some other refund with tag services environment. यहाँ पर system है, tables है, and files है. You can see that.
Is it audible? Is it audible right now? Yep. अभी आ रहा है ना? Yeah. So to answer your question, yeah, कहाँ पर रुक गया मैंने? To answer your question, what I want to convey here is, I'm completely क्या बोलते हैं? Stealth player, right? More than an action and gun gamer, I'm completely a stealth player. So I would like to upgrade only my melee weapons and the medication aspect. Right, but when it comes to the type of player also has a different functionality. Agar if we force a player to complete this game only with this particular weapon, again linear gameplay, if we force a player complete the level only with a stealth mode, again linear gameplay, right? तो उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर गिविंग मल्टीपल ऑप्शंस. बॉटलनेक आप जान चुके, लेवल फ्लो मॉडल, वहां पर क्या कर रहे हैं हम लोग, वी आर गिविंग ए प्लेयर्स मल्टीपल वेज टू प्ले द गेम एंड इट इज हिज जॉब हाउ टू फिनिश द टास्क. नो व्हाट एवर द लूट आई एम गेटिंग हियर, तो वो सारे चीजें मैंने सिर्फ मैडम मेडिकेशन एंड कंप्लीट क्या बोलते हैं, to play some horror game. Obviously, it is another set of horror, not complete. I think you know this. We're okay. Right? They can't see us. Last of Us कुछ horror से कम नहीं है, right? अगर आप खेल चुके हैं तो आपको समझ में आ जाएगा. As you can see, only the character enemies here, but when you find out and forward, समझ में आएगा. Cinematic cutscenes where the story narrates. Look, Leave him alone. Easy, son. I'm reminding Just take the it Walking easy. Dead It's series. all right. They're not the bad guys. Lower the gun. Man, you hit hard. So new game mechanics game में आती है. Yeah, I thought you were one of them too. Then I saw you. If you haven't noticed, they Who don't said kill kids without zombies? You can see that. Survival Deadpool, of if you don't know about Last of Us, Reading. just bear with me. You can find out worse than the zombies, I'm Henry. right? Sam. Is any question? think I caught your Utsav, name just is look Jordan. at. Is any question I'm missing? How many are कौन with सा you? question अगर miss हुआ They're तो all just dead, let me man. know. We don't know that. There were a bunch of us. अभी तो कोई This क्वेश्चन one मिस had the नहीं हो brilliant सकता. idea of ऊपर entering the miss नहीं city, होना, look okay. for हाँ. supplies. Those fuckers, they ambushed So, us. okay, let me Scattered finish us. this. Now it's all about getting out of this shithole. we can help each other. Ellie. Safety in numbers and all that. She's right. We could help each other. We got a hideout not too far from here. Be safer if we chat there. Right, take us there. Follow me. Sorry about the whole gun thing. Don't worry. I would have probably done the same. This is the interior again. You can see the you details from? here. All the way from So Hartford. अब गेम बनाने के लिए आपको I heard some bad stuff इंटरैक्टेबल about them. एसेट्स अलग होता है, नॉन इंटरैक्टेबल एसेट्स अलग होता है. इंटरैक्टेबल गेम एसेट्स वेयर लाइक द वेपन्स आई एम यूजिंग राइट नाउ, द बैग, राइट, और द लूट आइटम्स, और बहुत सारी चीजें इंटरैक्टेबल एसेट्स होते हैं. एंड व्हेन इट कम्स टू नॉन इंटरैक्टेबल, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, जो एनवायरमेंट एसेट्स बोलते हैं हम लोग. एक एनवायरमेंट आर्टिस्ट होता है जो सिर्फ इस एनवायरमेंट एसेट्स को डिजाइन करते हैं. जो डिजाइनर चाहिए, डिजाइनर को क्या चाहिए, वो सारी चीजें आर्ट क्रिएट करके देते हैं. फॉर एग्जांपल, दिस रूम रिक्वायर्स a wardrobe, it requires a bed and bed sheet, and ये सारे जो जितने भी assets आप जो environment believability के साथ जो create कर रहे हैं, completely नॉन इंटरेक्टेबल assets है. अगर वो भी आप देख सकते हो कितना डिटेलली वो लोग डिजाइन कर रहे हैं. इफ इट्स ए पोस्ट अपोकलिप्टिक वर्ल्ड, कितना डस्ट होगा, कैसे होगा, किस चीज का होगा, राइट. अगर ये है तो ये चाइल्ड आप देख सकते हो कि ये पेरेंट चाइल्ड के हिसाब से है, एंड यहाँ पर एक पेंट अलग है. एंड यू कैन सी हर छोटे से डिटेल के अंदर टेक्सचर्स, मॉडल डिटेल्स, एंड इसके ऊपर जो रिंकल्स है
ये भी ग्राफिक्स का अपडेशंस आप देख सकते हो, एंड वॉल से भी वॉल के ऊपर जो डिटेल्स देख सकते हो मिरर का, मतलब उस ग्लास का उस तरह से कैसे है, राइट? सो एवरीथिंग नॉन इंटरेक्टेबल एसेट्स यू कैन लुक आउट हियर, राइट? We gotta be careful. We're right So next to you one of the have lookout 4 areas. characters. ये स्टोरी राइटिंग में हम लोग क्लियरली पढ़ेंगे इस Just you and कैरेक्टर your daughter. एग्जैक्टली We're not related. कैसे We're क्रिएट related. करते हैं I एंड promised उसका someone I'd look क्या at. क्या होता है. Yeah. I can appreciate that. And question is Sir- the game story related? Yes, yes. सर लेवल डिजाइन फ्लो का हर एक हाँ. स्टेप एक बार बता दीजिए थोड़ा थोड़ा, साहिल को थोड़ा प्रॉब्लम है शायद. Level design flow. Okay. उससे पहले ये केवल is this game story related to the previous parts, or I can start it from the latest game? Yeah, this game story is completely new from this particular game, which is part 1, Last of Us, and it has a sequel and which is not yet for PC, Windows yet. It's completely a PlayStation game, the second installment. You can start, and when it comes to level design flow, see first flow क्या है अपने को already Wait, wait. पता है, which is linear level flow, Get away from the right? windows. So let me complete the cinematic so that you can focus on. They're gone. Man, that fucking truck. It's been hounding us ever since we got in this damn. Sam, what are you doing? Nothing. Get rid of it. My backpack is practically empty. What's the rule about taking stuff? It weighs like The nothing. rule. What is it? We only take what we have to. That's right. Now come on. Yes. So यहाँ पर एक अपने को एक cinematic How far is cutscene this आया है, and Close. without skipping Very the actual storyline, without avoiding the normal regular checkpoints, the story won't move forward. That's completely tells us it's completely a linear story mode, which is linear gameplay as well. And in game start होने के बाद आपको multiple ways है to complete any particular task. Obviously वो भी bottleneck है. इसके अलावा if we go for different destination, What'd you agar find? if I'm going to kill this particular enemy in a stealth mode, So where are the others? मुझे इस enemy को मारना चाहता हूँ, but in stealth mode, मारने के बाद क्या होगा Keep an eye कि out over there. वहां पर जो आउटकम है, जैसे एनिमी जिस रास्ते पे जिस जगह पे है वो वहीं पर होगा, उसको कुछ साउंड नहीं आएगा दूसरा एनिमी को, तो क्या हो रहा है यहाँ पर मेरा आउटकम नहीं बदलता है if I eliminated any particular enemy in a stealth mode until and unless they saw the particular body, right? If I took an action with a weapon, अगर मैं weapon से मार चुका हूँ तो वो साउंड सभी को सुनने आता है एंड सब लोग अपने को मारने के लिए आता है. यहाँ पर क्या हो रहा है, we are taking a decision to complete a task to eliminate this particular enemy either weapon or in a stealth mode. उसका आउटकम से डेस्टिनेशन भी बदल जा रहा है और मेरा आउटकम का रिजल्ट्स भी बदल रहा है. दिस कम्स टू ब्रांचिंग पार्ट. अगर मैं उसको मार रहा हूँ, राइट, एंड वो कंप्लीटली Right here! देखो मैंने साउंड क्रिएट किया, मैंने उनको डिस्टर्ब किया and that actually distract the gameplay. See, you can see that if I disturb, reinforcement आ गया and मतलब वहां पर जितना है उसका active mode चला गया, gameplay बदल गया, मैंने मर चुका हूँ, right? I have choose a different destination. But what if I go What'd you find? and complete the gameplay Looks like someone complete silent mode? Let me load something So where are here the which I can use They wanted to give for it the another once over. upgrades. Make sure we didn't miss anything. All right. Keep an eye out over there. I'll check this area. reload functionality, again ये भी एक mechanism है. So slowly मुझे इनको मारने के लिए कोशिश कर रहा हूँ without any detecting. You can see the sound if they are pointing towards us, and if it is for longer time they will detect us. That's also a bigger problem, so you should be very careful. And you can see there is an overlap. इस दो enemies overlap हो रहा है and ये दो enemies overlap होगा, तो we need to find out such particular time so that no one overlaps and we can eliminate them.
एक वो भी है, and let me find out where and when. You can see that this is somewhat difficult, but let me see what I can do. I can distract. You hear that? I distracted, Find out. but I think both are coming towards here, which is not good. I think yeah. Yes, sir. Yes. Branching is where See we anything? take a decision, and Nah, based on that nothing. decision, obviously the output impacts. And वो है अपना main. देखो मैं इसको headshot. You're gonna pay for that! He is in hide mode, and he will release. Yeah. I think I'm done. The outcome changed again. तो उसके हिसाब से branching होता है. उसके अलावा you have another branching mode, another level flow, which is Up on this truck. hub and spokes. वो चीज क्या है? Already mentioned you, a task starts at one point and ends at one point, but you have a multiple differences, multiple variations, जैसे spokes बोलते हैं, right? हम लोग अलग-अलग कोशिश करना है कि क्या what is required to complete particular to open a chest box, ये सारी चीजें hub and spokes के अंदर आएंगी, to solve some puzzles. अब 3-4 keys होना है to open a door. I think they are in alert mode. Oh God. Hide. Because of my sound किया, वो लोग alert हो गया, and they are here just because क्योंकि मैं top floor में आ चुका हूँ. My aim. Last bullet. Yes, देखो wall, देखो at certain height के अंदर ही मैं इसके ऊपर jump कर सकता हूँ. And this is also different set of mechanism. Right? अगर बड़ा wall है मैं jump नहीं कर सकता हूँ. Ladder है, ladder के ऊपर मैं चढ़ सकता हूँ. Again different set of mechanism. Right? And इसके अलावा एक और level flow है, वो है open level flow, which already this door. which is similar to bottleneck You ही sure है it's यहाँ पर. safe being so close to them? Openly I can choose And where'd you get what that? to do, but killed one of completing the entire task is what I listen require. now. ये Everybody open through. level flow अगर किसी को डाउट से मुझे पूछ सकते हैं यहाँ पर. Hub and It's back spokes here. is where we complete sub objectives to complete main objective. वो हम लोग open level flow बोलते हैं. And hub and spoke में थोड़ा सा relatable ही है. Is something like So, how old are you? Me? we are not going to are you? complete sub objective to Same. complete a main I'm object. 14 ऐसा नहीं now. बोल सकते हैं. I'm लेकिन close. उसका जो clues है, All right. right? I am. Like for example, I need to open a door. I need 3 keys. So I need to collect 3 keys in 3 different locations, and then I can open my door. Yeah, hub and spoke का level flow है, right? And how you do that is completely it's up to you. थोड़ा सा open and hub and spoke का relatively Here होगा, we तो are. don't get confused. Welcome to my office. Yes, कौन से question miss हुआ? How long have you guys been holed up in here? How long do you want the few answers days. to be? We found a bit of food though. Here. Okay. Answers का length Blueberries. सिर्फ Found a whole stash weightage of 'em. and You want जितना amount No. उस वो justify relax. करता है We're वही safe. depend करता है. I'm not going to look for 1 line or Why 10 haven't you lines. left? But वो justify करना है waiting exact for the right amount of opportunity. information And? for the detailed question. मेरा question बहुत ही छोटा सा question Check paper this है. out. Question paper आपका आधा भी नहीं है, right? एक पेपर का, तो उतना छोटा सा question paper आपको दे रहा हूँ, and आप समझना है कि observation Sons is the of key bitches. for the question paper. Every day they congregate down Only there. the observation is the guarding that key. damn bridge. And Come nighttime, it's down to a skeleton crew. अभी तक हम लोग क्लास After में sunset, till today that's our window. जिस गेम्स डिस्कस gone, किए, जिस गेम sneak खेल right चुके past हैं, them.
जिस गेम्स के बारे में हम लोग could work. बात Oh, कर it'll चुके, work. जिस गेम हम लोग खेल चुके, ये definitely सारे गेम्स के ऊपर ही अपने टास्क Wow. होगा। ये चीज आपको नोट करना है। दिस इज द क्लू फॉर द क्वेश्चन पेपर। It's been a while since that boy even cracked a smile. She doesn't seem bothered You're by gonna all write a this. whole book. Which book? So where were you heading? Heard the Fireflies are based out west somewhere. ये शॉर्ट आंसर्स विल वर्क। उसके हिसाब से अगर क्वेश्चन Something पूछेंगे, इतना आपके पहला एग्जाम है, There's a lot of people putting their and stock on the don't Fireflies these days. Yeah, maybe टेक there's a reason for हैवी, राइट? So you बहुत don't know where आसानी they से आप are, लिख you're just सकते हो gonna drag him across the एंड country बहुत to सिंपल find सा him. आप लिख सकते हो, Tell you what, राइट? how एंड about I worry about my brother, But- you worry about your girl. यही चीज है कि जितना भी हम लोग बात कर चुके हैं, चाहे वो गेम मैकेनिक्स हो, गेम रूल्स हो, We're looking for the कॉन्सेप्ट्स हो, Fireflies आइडिया too. हो, गेम कंट्रोल्स हो, लेवल फ्लोस हो, लेवल डिजाइन का डिफिकल्टी हो, राइट? एंड जैसे कम्युनिकेट कर रहा है एआई हो, राइट? सो एवरीथिंग This is us. what we There's an discussed till abandoned now military radio station should be just outside the carried city. out in the question paper. Any जो भी survivors मैंने from our group, पूछा they're था वो supposed to meet सारे us वहां there पर आपको tomorrow. रखना चाहिए। You and your girl, you want to join us? हाँ, It goes down yes. tonight. तो I एंड guess we best rest. जो अननोन थिंग है तो वो चीज है वो ऑब्जर्वेशन। जो अभी तक क्लास के अंदर अगर कोई एब्सेंट है, किसी क्लास में भी अगर कोई एब्सेंट है, तो यू शुड बी वेरी केयरफुल। तो आपको मुश्किल हो सकता है कितने भी क्लासेस के अंदर, अगर इफ यू आर He says it's time to अगर go. मेरा लास्ट 4-5 क्लासेस के अंदर आप है, देन इट इज गुड टू गो फॉर इट। No, we're gonna be moving fast, okay? So no matter what, you stick to me. Which like one known glue. fact I didn't Like get you? glue. Got it. Legacy Good. Ralphonet? Good. Which one known Right. fact? Y'all ready? Yeah. Okay. All right, y'all stay close, okay? You tried this before? Yeah. That's comforting. See, I'm not going to include production pipeline and game roles here. उसके अलावा गेम डॉक्यूमेंटेशन का जो एलिमेंट्स है वो सारे चीजें हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं। GVD। हाँ, yes, This way. that's completely great. And this game is award winning game. ये चीज आपको पता होना चाहिए। if you want to write down a game mechanics, तो कैसे लिखना है ये क्वेश्चन मार्क है। तो उसके लिए n नंबर ऑफ मैकेनिक्स गेम के अंदर कितना है वो सारे ब्रेक डाउन करो, उसको स्टेप बाय स्टेप पैटर्न में लिखना पड़ेगा। प्लेयर मैकेनिज्म क्या है, Let's try to take him out अपोनेंट behind. मैकेनिज्म क्या है, एनवायरनमेंट मैकेनिज्म क्या है, कंप्लीट गेम प्ले मैकेनिज्म्स क्या है, ये सारे ब्रेक डाउन करना है। अगर इफ यू वांट टू राइट डाउन द रूल्स How you ऑफ doing? दिस पर्टिकुलर गेम प्ले, तो पूरा Just trying to keep रूल्स को warm. लिस्ट आउट करो, How's it रूल्स को looking up डिवाइड there? करो, राइट? कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स क्या है, Sounds लॉजिकल effective. प्रोबेबिलिटी रूल्स क्या होता Some है, of those वो tourists. कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स है, एंड Think they're still ऑपरेशनल in the रूल्स city? व्हिच इज फंक्शनैलिटी रूल्स क्या है, उसको Yeah, they're सेपरेटली still around. आप डिवाइड करते हुए वो चीज आपको लिखना पड़ेगा। All right. Exactly. I'm gonna do Question another round. paper is constructed Watch your upon what you learned so Yeah, far, You too. based on the observation, what you gained so far. ये both attach करो. What you learned so far and what you gained so far. You can write about AI as well. It's not about like you have to, right? It's not about you have to. सर कंट्रोल्स के भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं क्या? हाँ, ऑब्वियसली कंट्रोल्स, कंट्रोलर अलग है। लास्ट क्लास में हम लोग ये उसके पहले बोल कंट्रोलर क्या होता है, इफ इट इज फॉर मोबाइल कंट्रोलर क्या है, इफ इट इज फॉर पीसी कंट्रोलर क्या है, कंसोल कंट्रोलर क्या है। कंट्रोलर के अंदर कंट्रोल्स अलग है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कीबोर्ड से कंट्रोल्स प्रेस कर रहा हूँ, एरो कीज से मूवमेंट बनाना अलग है, बट WASD से मूवमेंट बनाना अलग है, उससे यूजर एक्सपीरियंस बदलता है। तो वो चीज भी इम्पैक्ट आपको ले आना पड़ेगा गेम के अंदर, राइट? इफ आई एम लुकिंग दिस एनवायरनमेंट विद माय माउस, वो मुझे फ्लेक्सिबल फील हो रहा है राइट साइड से। अगर मैं इसी चीज को एरोस से मैं लुक कर रहा हूँ तो थोड़ा सा अलग तरीके से मुझे एक्सपीरियंस कर सकता है, नो? वो चीज डिफरेंट है। दिस इज अ डिफरेंट एबिलिटी। यू कैन सी दैट गेम प्ले के अंदर आई कैन hear the sound of my enemies,
इट्स अ डिफरेंट मैकेनिज्म के अंदर है। Oh, my decision change here. पेपर ऑलरेडी रिवील कर चुका हूँ इस एंटायर स्ट्रीम के अंदर ही, राइट? थोड़ा सा आपको उसको समझ के जाना पड़ेगा, कैसे रिवील किया, क्या रिवील किया। Let's try to take him out quietly. कैंडी क्रश, नो, एंग्री बर्ड्स, ये completely different set of controllers का गेम प्ले है। Just trying to जैसे think फर्स्ट more. पर्सन गेम प्ले, How's it थर्ड looking out पर्सन there? गेम प्ले, ये लास्ट ऑफ अस गेम Go प्ले, down थर्ड some पर्सन infected. गेम प्ले। लास्ट क्लास में No हम लोग sign क्या of those गेम खेल चुके tourists. हैं? लास्ट क्लास गेम खेले Think थे they're ना, still in कुछ the तो गेम city? खेले थे, भूल गया मैं। Yeah, they're still Did we? around. Did we play? हाँ हाँ, last class we played Total Overdose. All right. Again, third person I'm gonna do gameplay another round. has a different sort of mechanism and lot of Yeah, me things too. inside of a gameplay. जो class नहीं आया वो भी समझना है। And उससे पहले I took an example of GTA and many more games, right? ये चीज़ भी आपको समझ में आना है। Yes. Isn't that a considered player mechanism of a hearing? Obviously, it is a player mechanism. Yes. सर Every- फाइटिंग गेम्स में एआई स्क्रिप्टेड होता है या डिसीजन मेकिंग होता है? कौन से? फाइटिंग फाइटिंग गेम्स में फाइटिंग गेम्स में डिसीजन मेकिंग होता है। You are in fighting games like Mortal Kombat and all those things has a decision making because they are going to take a decision वहाँ पर। वो कैसे डिसीजन होता है उसके अंदर, फॉर एग्जाम्पल अपॉन व्हाट एक्ट हाउ दे आर गोना रिएक्ट, राइट? अगर उनको पावर अप यूज करना है, अगर सम अदर थिंग यूज करना है, उनका रिएक्शन अपने एक्शंस के हिसाब से होगा, राइट? इफ यू जंप तो उसका कैसे होगा, राइट? अलग अलग तरीके से अलग अलग वेज में इंटरेक्टिव डिसीजन मेकिंग होगा। अब यहाँ पर देखो, एनिमी यहाँ पर आया, right? And the enemy actually can detect the body, and also the enemy also can call the reinforcement which is on the way right now, right? And the enemy also can hide, right? बहुत सारी चीजें AI कर सकता है, वो चीज भी important है। Right? Did you get that or something I missed? I think last one. Okay. अच्छा बेटा, जा जा जा। Oh, वहाँ पर एक और है। देखो बॉडी देखने से पहले I need to get him down. If not, he can call reinforcement. Someone look. देखो light के detection से has been recognized and उसके हिसाब से again reinforcement आ सकता है। Again, this is tough. Sir, can you define scripted AI? Like, does it have one or two options or just one? It's not about options. You need to understand scripted AI यहाँ पर options के part में, scripted AI के अंदर predefined actions हम लोग describe करते हैं, right? पहले ही AI is not gonna decide something. Scripted AI is something like, you know, आपने Mario खेल चुके हो, right? Mario के अंदर जो obstacle हो और या कुछ भी ये चीज है, वो उनका काम वही करेगा। जैसे नॉन इंटरेक्टेबल थिंग्स हो सर, अगर आप उनके सामने हो या ना हो वहां पर फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप उनके साथ अगर हिट हो उसका एक्शंस होगा। तो ये भी स्क्रिप्टेड एआई के अंदर आएंगे, कंप्लीटली मिनिमलिस्टिक से लेकर, राइट? तो यहाँ पर लॉजिक बिल्डिंग जो है मिनिमलिस्टिक होगा एंड यहाँ पर बिलीवेबिलिटी बहुत कम होगा स्क्रिप्टेड एआई के अंदर, ये चीज देखना है। And Death Stranding realized the game cinematics were the way of it is unique approach to mechanism and the whole quick storage system. हाँ, मुझे एक्सपीरियंस करना है। I'm actually waiting. Did I have? I need to. Yeah.
और कुछ मिस हो गया, just sometimes you need to repeat. When the enemy dies, you can see the red X mark on the map, on the UI part. That indicates that he's completely dead. Henry, keep an eye out. I'm on it. I have a low L. If I choose my action without stealth mode, it's very difficult to survive. Oh god, oh god. Red icon. I'm going to... Oh god. Give me a second. So enemy में क्या क्या आता है? Enemy mechanism you're saying, like, for example, enemy can detect us, also comes under the AI part, and can shoot us, and enemy can call the reinforcement. Enemy has an ability of power-ups where it can shoot it on side. Enemy has an ability where it can throw a grenade, right? Now enemy has an ability where it can where they can hear us and move forward with that. तो हर छोटे चीज भी यहाँ पर इम्पैक्ट करता है enemy AI के हिसाब से. God. Come on. I missed someone. कौन है? एक नहीं. I'm planning with ray tracing on, playing with, planning with. Okay. I don't think so. मैंने कुछ ग्राफिक सेटिंग्स किया नहीं, ऑटो सेटिंग्स में ही खेल रहा हूँ अभी. Don't lose him! I'll do that. I'll do that. Here he is! I think one enemy is left. Okay. मेरे पास एक ही. I don't have. Watch my back. Very difficult. Got it. I can only change. मेरे पास ये है और Watch एक out. छोटा सा पिस्तौल है. It's over here. Very good. Okay. Should have paid for that. Okay. अभी तो कुछ सेटिंग्स नहीं किया. I saw Right there. Oh god. I don't have a having space. सर एक बार Hell गेम are you? कैरेक्टर्स के टाइप्स के बारे में बता दीजिए. Game character types. Okay. 1 second. यस सर. 1 second. ये भी थोड़ा सा. See, when I'm healing, he's coming and attacking us. वो शूट नहीं कर रहा. वो चीज भी AI के अंदर इम्पोर्टेंट होता है, ताकि when they can directly when we are गन ओपन करके उसको शूट करने के लिए बैठ गया ना, they won't come us. तो अब बताओ उत्सव एनिमी टाइप्स, कैरेक्टर टाइप्स. सर एनिमी या कैरेक्टर सर? देखो वो चीज हम लोग अभी डिस्कस नहीं की है, राइट? डिफरेंट सेट ऑफ कैरेक्टर्स होता है या कैरेक्टर टाइप्स होते हैं, वो चीज हम लोग डिस्कस नहीं किए. हम लोग यही डिस्कस किए कि गेम के अंदर क्या क्या कैरेक्टर्स या इंटरेक्टेबल होता है, एआई होता है, चाहे वो एनपीसीज हो, एनिमीज हो, एनिमीज का बॉस हो, राइट? ये सारे डिटेल्स हम लोग पढ़े नहीं, बट ओवरव्यू तो हम लोग देख चुके हैं व्हेन वी आर स्टडीइंग मैकेनिज्म एंड एआई पार्ट. वो ओवरव्यू रख लो बस. माइंड मैपिंग, साहिल, माइंड मैपिंग इज दैट थिंग. फॉर एग्जाम्पल आपने गेम बनाना चाहते हो या कुछ कॉन्सेप्ट के ऊपर आप थिंक कर रहे हो, राइट? एंड यू हैव द मल्टीपल आइडियाज, राइट? आपके पास बहुत सारे आपके पास एक आइडिया है, आपके फ्रेंड के पास एक आइडिया, आप समझ नहीं पा रहे कि कौन सा आइडिया पे काम करना है. बट व्हेन यू ट्राई टू कंबाइन और यूज कैम्पर मेथड्स और लॉट ऑफ मेथड्स टू कम्युनिकेट एंड ब्रिंग वन आइडिया, मतलब सभी आइडियाज को मर्ज करके उसके अंदर जो बेस्ट होगा, जिसका जो आइडिया एलिमिनेट होना है, जो आइडिया कंबाइन करना है, मतलब मल्टीपल थॉट्स को कंबाइन करके एक नया जनरेट करते हो, वो है माइंड मैप, राइट?
सो मुझे आइडिया है कि मुझे गेम बनाना है, लेकिन गन का गेम बनाना है। योर फ्रेंड को एक नया आइडिया है कि आई वांट टू मेक ए गेम वेयर स्टेल्थ गेम, और दूसरे को आइडिया है कि वो इनफाइनाइट रनिंग गेम। इस तीनों में 3-4 आइडियाज को आप एक मिक्स करके, ऐड एंड डिलीट करके, कंबाइन करके, मैनेज करते हुए आप जो आइडिया जनरेट करते हो, एंड दैट प्रोसेस इज माइंड मैपिंग हियर, राइट? आपके एक आइडिया, आपको दोस्त का एक आइडिया, या समथिंग लाइक दैट। We stick together. ठीक है, कल एग्जाम है, किस किस को, आई थिंक दिस इज द ओनली थिंग दैट व्हाट वी वांट टू डिस्कस, राइट? एंड जिस चीज को लीव करना है, दोज हु वांट टू कंटिन्यू विद द गेम प्ले, सॉरी गॉड, वो भी डेथ हो गया, तो आई मीन यू कैन प्रोसीड राइट नाउ टू कंटिन्यू योर एग्जाम। तो कल जल्दी भी उठना है, एंड Joel, come on! मैं तो गेम और थोड़ी देर खेल लूंगा, खेल के उसको फिनिश करूंगा, और जिसको डाउट है यू कैन कंटिन्यू, एंड जिसको है आई थिंक ऑलमोस्ट यही चीज डिस्कस होने वाला अपने को। दैट्स द ओनली थिंग व्हाट आई ट्राइड टू डिस्कस। एंड एक चीज इंपॉर्टेंट है, जो चीज अभी तक हम लोग डिस्कस की है, उस डिस्कशन के अंदर ही क्वेश्चन पेपर छुपा हुआ है। दैट्स Fuck, do we get out of here? ज्यादा कुछ ये नहीं है। क्लासेस एंड दिस बहुत सिंपल एंड वेरी इजी पेपर फॉर्मेट। हाँ, क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट में बता रहा हूँ सभी को, ये चीज केयरफुल होना है। सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ 50 मार्क के लिए, एक ही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। गॉट इट? एंड दैट्स Sounds like they found it. द इससे ज्यादा क्वेश्चंस उसके पेपर के रिलेटेड नहीं पूछना है, ठीक है? तो गौतम नीड्स मी, ओके बैटमैन, तो आप जा सकते हो। You see that? What? What is it? Zombie hunting, yep, अभी zombie आया नहीं, okay, we'll wait, yep, ठीक है, carry on, please, yeah. Tables! Oh god. Come on. Wait. Behind you! Okay, Watch my... English, yeah. You were gonna pay for that. Come on. Do I have any buffer period for healing? Healer तो नहीं है. What critical? You could probably use this. Thank you. चलिए अपने को दिए. Thank you for that. Mind mapping again. Okay. Mind mapping complex thing नहीं है. It's completely a brainstorm technique where you are gonna generate something while combining multiple things, right? ताकि हो सकता है कि मेरा अकेले के जो आइडिया काम में नहीं आ रहा. I'm not going to, I don't have any strong point to move forward to create something. तो उसके लिए मैं क्या करना है? तो उसके लिए you need to find out. आपके टीममेट्स को बुला लो, उनको पूछो कि ये मैंने काम कर रहा हूँ, तो इसके ऊपर आपका भी कौन सा आइडिया से आप उनको पूछना है कि पिच करने का, एंड देन उस आइडियाज के अंदर where you can use those ideas and combine things and eliminate something. अच्छा आपका अच्छा है, आपका अच्छा नहीं है, आपके अंदर सिर्फ मैकेनिज्म अच्छा है, आपके अंदर सिर्फ वेपन अच्छा है, so you can do lot of things when generating multiple ideas. ठीक है, तो उस टाइम के हिसाब से आपको ये चीज समझना पड़ेगा, तभी एक नया जनरेट आप कर सकते हो. अकेले से अगर काम नहीं हुआ तो वो है माइंड मैपिंग के अंदर. We have done that in the class also, mind mapping technique. Got it, mind mapping How many का. bullets do you have left? They're gonna kill तो us. level design में skills are really all over the No, it's too like high and you training can't level 1 swim. don't have to I'll distribute boost you it up, in you run 10 past so I him. put a few missionaries from level 2. Weak or strong.
हाँ, तो ये चीज भी हम लोग डिस्कस किए लेवल डिजाइन के अंदर. If the player is in level 2, let's take Assassin's Creed or this game itself. हम लोग बोल रहे हैं कि प्लेयर का जो लेवल है वो लेवल 42 है. 10 enemies के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं. What if we distribute every enemy per level 42? Obviously the game would be more challenging and more difficult to play the gameplay, which is not at all justifically true. And second, if we create completely सभी का 2-2 लेवल दे दो, 3-3 लेवल दे दो, एक मुक्के में वो मर जाएगा, Hey, you. राइट? तो वो चीज भी गेम के लिए वो सही नहीं है. तो हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करना है कैसे? तो there are a few enemies that should be as equal as a player level, which is 41, 42, 43, something like that. And there are enemies which should be more than a player He's pissed, but he's not level, gonna do like anything. You sure about 50, that? 48, 47, एक दो होना चाहिए. और there are No. enemies which should be had a good chance lesser, of making it, ताकि but he एक दो did. मुक्के में जो मार सके Come वो back to चीज भी you. होना, ताकि Put him at combat risk. should be Stay balanced. back. तभी वो लेवल डिजाइन के डिफिकल्टी बैलेंस हम लोग If कर it was the other सकते way हैं. around, would you have come back 10 for लोग us? को कम नहीं, 10 लोग को ज्यादा नहीं, Same in here. between. You saved me too. एंड एक और चीज, एक और हिंट मैं आपको देना चाहता हूँ जो लेफ्ट किया उनके लिए नहीं है ये. आई मीन जो चार्ट यहाँ पर आया है, बस इस चार्ट का सारे क्वेश्चंस आंसर्स का जितने भी है वो सारे चीज भी अगर आप देख लिया तो क्वेश्चन पेपर आपको यही सी है. कंप्लीट You चार्ट know, for what it's सेक्शन. worth, I'm really glad we spotted you. इससे इसके चार्ट के अंदर ही पेपर है ना इज Now, हिडन. that radio tower, it's on the other side of this cliff. Okay? Place is gonna be full of supplies. Neo, so like Neo Gonna be really 2-1, happy you didn't kill we me. get stronger as we level up, so but the enemy also gets stronger and the fjord there who Hey, are we're way gonna search stronger this than the area. even though they See what we level come up. up with. हाँ, exactly. तो That was चाहे मेरा intense. लेवल 10 है, enemy का लेवल 10 है, अगर मेरा लेवल 12 हो गया, enemy का भी लेवल 12 होगा, उससे ज्यादा भी enemy combat में होगा, तो यहाँ पर it doesn't matter you are at level 1 or level 50. YouTube chat, your 1 or level 50. अगर आपके साथ enemy का level भी grow होना चाहिए, that is what we learn in the AI part. If the player level is increasing and if not the enemy, that if there won't be any difficulty part, right? तो वो चीज आपको देखना है. There should be increase, but the game should be balanced. Not chart, CHAT chart. YouTube chart जो है ना वो वाला. Environment, sky, birds and their animation, the water textures. Environment study अभी नहीं करना है, but just overview हम लोग देख रहे हैं. उसका डिटेल Okay, go मजा this आएगा way. अपने को आगे बहुत ही एक्सट्रीम डिटेल में पढ़ेंगे. हाँ? As you can see, I have over here. यहाँ पर सिर्फ दो है. Like कनर्स यहाँ पर तो कुछ नहीं है. नहीं चार्ट में क्या. Spider-Man Remastered. Spider-Man Remastered में तो Spider-Man का लेवल है लेकिन एनिमी का नहीं होता है. No, this is something wrong. Spider-Man चाहे remastered हो, अगर उसमें सेटिंग्स के अंदर डिफिकल्टी इजी मीडियम जो भी करो हल्का सा चेंजेस हो सकता है, बट देयर इज ए चेंज. अगर जस्ट इमेजिन स्पाइडरमैन का लेवल आप अपग्रेड करते हुए जा रहे हो एंड वो लेवल है लेवल 30, लेवल 40, राइट? एंड एनिमी लेवल 2-3 का ही रुक गया. एक बार इमेजिन कर लो वो गेम प्ले कैसे होगा एंड वो गेम के लिए कुछ मजा आएगा क्या? नथिंग एट ऑल, राइट? तो आपको उस गेम के हिसाब से आपका एनिमी का स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा, लेवल भी बढ़ेगा, लेकिन कम्बैट आप ऑब्जर्व करो बैलेंसिंग होगा. एक दोनों का प्लेयर से हाई होगा, एक दोनों से इक्वल होगा, एक और बाकी सारे क्रू इससे थोड़ा कम और लेस कम में ही रहेंगे. हाँ? तो वो चीज आपको ऑब्जर्व करना है.
से आगे रहते हैं सर। For a second Sir, there, I right now. thought you might shoot him. मतलब Almost did. They're all कर right. लेते टाइप्स है ना, I think it's रोड good to have him around. रोड मारता, हाँ टाइप्स है वेयर हैज अ डिफरेंट सेट ऑफ, बट टाइप्स के अंदर भी लेवल बढ़ेगा उनका। नो ऐसा नहीं कि वो लास्ट तक Hey, I bet सेम this goes all the रहेगा। way through. Spider-Man Remastered के सर इन God of War if we increase difficulty then Let me increase hammer enemy this. health power and quantity। हाँ वो भी होता है, वही उसका लेवल इंक्रीज करना क्या होता है। एक स्मॉल क्वेश्चन ये आप समझो, एक एनिमी का लेवल इंक्रीज करना क्या होता है। एक है उनका बिहेवियर सिस्टम, दूसरा है उनका कंप्लीट चार्ट, जैसे Let's do it. हेल्थ हो, पावर हो, राइट, और अमाउंट ऑफ एनिमीज पर टाइम वो हो, All right, come on, kids, go. वो चीज डिफिकल्टी बढ़ाना होता है। एंड उसके अलावा बिहेवियर मतलब स्मार्टनेस, सेंसेस यूज करना, ताकि उसका जो विजिबिलिटी है जितना डिस्टेंस वो देख सकता है उससे ज्यादा वो देख लेगा, विजिबिलिटी इंक्रीज होगा। और चाहे उसका साइट हो, उसका सारे बिहेवियर का स्मार्टनेस में जो स्ट्रेंथ है वो चीज भी बढ़ाना इज आल्सो द लेवल अपग्रेड। तो ये चीज गॉड ऑफ वॉर के अंदर आप देख सकते हो, और एनी सॉर्ट ऑफ गेम। अब अगर एनिमी का बुलेट मुझे हिट हो रहा है, मेरा 10% डैमेज हो रहा है, लेवल इंक्रीज में क्या होगा, वो 20% डैमेज होगा। राइट, अपन क्या बताएंगे यहाँ पर मेरा जो हेल्थ बार राइट साइड में चेक करो, मेरा हेल्थ बार हाफ सर के लिए अगर मैं, लेकिन ये भी समझो एनिमी जब डैमेज करेगा वो बड़ा डैमेज करेगा, छोटा नहीं। तो वहां पर इवन हो गया, थोड़ा हल्का सा आप फील करोगे, थोड़ा सा आपको इंक्रीज हुआ, बट गेम प्ले तो बैलेंसिंग बनाएंगे। That's the part. If you can get it open, I can crawl through and clear that door. Oh, yeesh. That is a big rat. Given the sudden attack also, like when attacking in God of War we have to press, क्या समझा नहीं, we have to press God of War, we have to press button on time attack or dash, that time that's the concept। हाँ समझ गया, टाइमली बेस्ड एक्शन, राइट, टाइम के हिसाब से वो आपको एक्ट करना पड़ेगा, इफ नॉट यू विल लूज। गॉड ऑफ वॉर में ऐसे बहुत सारे चीजें हैं, उस अगर एनिमी आपने को अटैक कर रहा है एग्जैक्टली उस टाइम के अंदर ही आपको रिएक्ट करना पड़ेगा, इफ नॉट आइदर यू विल लूज और आपको डैमेज होगा या कुछ भी, राइट। एंड उसका उस चीज के लिए भी आपको अपग्रेड कर सकते हो, नो दैट वो चीज भी वर्क है। हाँ वो टाइमली बेस्ड पार्ट है वो तो। ऑलवेज डिस्टर्बिंग नहीं, यहाँ से एग्जिट है, नो नोवेयर। As you can see, I can't find any exit. Is this the only loot store? Door locked. I can't move that. ऊपर नहीं जा सकता। I cannot get back to this position. So obviously मुझे पता चला I need to go back. Okay, I already forget this. Two ways. ये लेवल डिजाइन में हम लोग पढ़ेंगे। एनवायरनमेंट के अंदर देखो, लेफ्ट साइड एक रास्ता है, राइट साइड एक रास्ता है। कभी गॉड ऑफ वॉर में देख सकते हो या कुछ भी, एक रास्ता ऐसा होगा जहां पर लूट आपको मिलेंगे एंड एनवायरनमेंट भी आपको फोर्स करेंगे कि लूट तरफ ही, एंड दूसरा रास्ता होगा जहां पर आपका एक्चुअल प्रोग्रेस होंगे। देखो ये कैरेक्टर्स यहाँ पर खड़ा हुआ है ताकि यहाँ से हम लोग आगे बढ़ना है, नो ये चीज लेवल के एस्पेक्ट हम लोग आगे ऑब्जर्व करेंगे। Can we get out this way? When the enemy touches the dead body to No, there's alert no way to others, reach that. I okay, can't swim. That makes two is of the us. touch based system because how to interact with the alert। आप एक बात समझना Mind है, y'all.
everything in the gameplay Guess we touch gotta figure based ही something होता है. वो all senses, whether sight, sound or anything, things are some हर kind of trap. senses हम लोग Maybe there's a way touch we can based use it. system से ही हम लोग communicate कर रहे हैं. वो touch based कैसे होगा? Point to point, Look, a box generator. to box, collision हम लोग बोलते हैं यहाँ पर, right? और ray cast, ऐसे अलग अलग तरीके से touch based system से ही हम लोग interact करते हैं. Hey, maybe this will lead somewhere. Dive inside of water. So they are saying to dive inside. तो बिना टच बेस सिस्टम चाहे वो साउंड हो वो बॉडी तक आएगा, लेकिन बॉडी में क्या फाइंड आउट करे? उसके ब्रेन के अंदर फीड है when someone died. वो एनवायरनमेंट के अंदर 3 लोग हैं, राइट? कोई मर चुका है, तो वहां पर उनको ये चीज भी होगा कि अलर्ट मोड, when someone died अलर्ट मोड होगा ताकि they can call reinforcement. उसके हिसाब से डायलॉग्स पॉप अप होंगे एंड ये सारी चीजें टच बेस सिस्टम ही होगा. सेंसस figure it out the way from underwater. यहाँ तक तो लगाने में मुझे कुछ दिखा है. Is this? Oh God, I need to get out. Henry, give it a shot. All right. Yeah, it's working. I'm gonna have a look. Tomb Raider, exactly. Exactly. I could also वो चीज याद आ रहा है मुझे. Tomb Raider gameplay. Those are the different sort of thing, but environment and water undercover, mercenaries, everything आप remind कर सकते हैं. I throw that क्योंकि उसका इस्तेमाल भी होगा and but उससे क्या करेंगे अपन? You can see now we are gonna take this, just to do something. ये सारे actions अपन को करना पड़ेगा. I'm using this as a bridge to connect or to make someone stand on a board. Let's go, Ellie. Oh, there you go. That's smart. Okay. Now I Ah, I can't wait to get out of this make place. it stand on this side. As simple as it is. All right, see if that generator's still got some juice. Here goes nothing. I can't stand. Alert. Alarm. All right. Because not the environment, the post-apocalyptic itself is a dark mode, don't jinx dark us. theme. And obviously we can understand कि कैसे impact होगा, right? So environment dusty and rusty and जहाँ पर भी देखो पेड़ पहाड़ हर चीज Time to and get going. dead bodies everywhere. And एक चीज ये है post apocalyptic I gotta is say, also I'm my impressed with favorite you one. two. And We're n pros. number of worlds and variations. चाहे कितना भी fantasy world create करो, बस this hits different for me. What's up with this? Whoa. It's a soundtrack. A what? It's a sort of alarm. I don't hear anything. Someone used to live here. Don't look like that's the case anymore.
Who would stay in here? Someone who thought they could keep a place like this safe. कोई कुछ ड्रॉ भी करना है, अगर आप ड्रॉ किया तो वो बोनस पॉइंट्स होगा। अगर आंसर में कुछ कम पड़ रहा है लेकिन ड्राइंग कम्युनिकेट कर रहा है कुछ, ऑब्वियसली इट्स अ बोनस पॉइंट। वो मैं क्लास स्टार्टिंग में आपको बताऊंगा क्वेश्चन पेपर देने के बाद। Calm down. तो वो चीज Take down. बोनस है Another if you closer look. use your drawing skills। Ready? Okay, do it. Henry, did you How see that? that even happen in real Yeah, life? but- Yeah, because देखो एक चीज अब समझना है, Yeah. when Sorry. creating any gameplay interactions, आपको game world is comes to priority. Game world is not about how detailed graphics are, it's about how detailed elements are. Game world के अंदर आप समझाना चाहते हो कि ये एकदम ऐसा ही है, and वो चीज रियलिटी से हम लोग रिलेट कर पा सकते हैं, एंड वो चीज हमको बिलीवेबिलिटी अगर आ गया, गेम प्ले कम्युनिकेट एंड एंगेजमेंट बनेगा। इफ नॉट वर्ल्ड बिलीवेबल, अगर हो सकता है कि आपने बोल रहा कि प्लेयर ने उड़ते हुए जा रहा, फ्लाई करते हुए जा रहा है, लेकिन आपको समझ में आता कि इसका कुछ पावर्स ही नहीं है, ये कैसे हवा में उड़ रहा है। लेट्स लाइक सेंट्स रो के अंदर ऐसा बहुत सारी चीजें होता है, राइट? तो वो चीज बिलीवेबिलिटी नहीं रहेगी, कैसे कैसे ये हवा में उड़ रहा है, ये क्या हो रहा है। तो इट डजंट मैटर यू मेक ए मैन ऑफ स्टील कैरेक्टर, बट द वर्ल्ड शुड बी बिलीवेबिलिटी, ताकि इसका पावर्स ये है, इसका वर्ल्ड ये है, इसका फिजिक्स ये है, एवरीथिंग नीड टू बी रिलेटेबल। ओके, तो वो चीज alert. I choose action over stealth. I love bow and arrow, but I struggle to work with that. Press E while in scope. Oh god, Well, I missed I this guess we know part. what happened to these people. Seeing how there was a clicker, they've been वर्ल्ड doing मुझे it for a while. समझ में आता है, तभी मैंने गेम प्ले All we can do is hope there और are more of them. एंजॉय हो पाएगा। Doubtful. हाइपर कैजुअल इज कम्प्लीटली डिफरेंट, लेकिन स्टोरी बेस्ड गेम स्पेशली, तब तक आपको वर्ल्ड समझ में नहीं आएगा, कितना बड़ा स्टोरी भी हो मैटर नहीं करता है, और गेम प्ले मैकेनिज्म भी हो। लेट्स टेक आउटवर्ल्ड्स या ऐसा कुछ गेम आया रिसेंटली, आउटवर्ल्ड्स आई थिंक, नॉट आउटवर्ल्ड्स, हाँ आउटवर्ल्ड्स ही है। इट हैज अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ मल्टी मैकेनिज्म गेम प्ले, लेकिन वहां पर बहुत सारी चीजें लैक करता है जो वर्ल्ड को बिलीवेबिलिटी करने में, वो चीज गेम प्ले के अंदर भी इम्पैक्ट पड़ा है। अदर देन दैट उसके अंदर डिफरेंट एक्शन गेम्स, गेम प्ले मैकेनिज्म्स है वहां पर स्टडी करने के लिए, वो चीज बहुत ही बेनिफिशियल है। Jesus. आई थिंक इट्स आउटवर्ल्ड एज आई रिमेंबर, रिसेंटली आया 1-2 इयर्स के अंदर ही, वो चीज हम लोग आगे देख लेंगे। सी यहाँ पर तक तो यहाँ पर कैक्टस खड़ा हो, ताकि दिस इज द वे वेयर वी नीड टू मूव फॉरवर्ड ऑन द वे ऑफ कम्युनिकेटिंग। Another conflict. Yeah, I'm cool. Story. That was me. I must have triggered some kind of safety gate or something. Henry, see if we can lift this. So, this is awkward. Yeah. I know. It's like every time. Hey, this thing isn't budging, man. Just go. Get out of here. Sam, you stay close to him. Henry, we gotta fucking move! You keep him safe. Go. The outer worlds. Outer worlds. Yeah, the outer worlds. You can see mechanisms बहुत different उन्होंने वहाँ पर कोशिश की एक्शन मोड में. Yeah. But yeah, the I know. problem is the believability of world के अंदर वहाँ पर See if there we is can find a something way out of here, yeah? lag. देखो if I press T, torch आएगा, ये mechanism नैन ऑटो डेमोन्स्ट्रेशन, that's great. Obviously मैं वेट कर रहा हूँ उस गेम को खेलने के लिए, एक बार वो भी खेलेंगे. लेकिन वर्ल्ड बिलीवेबिलिटी समझो, वर्ल्ड बिलीवेबिलिटी हैज बहुत लैक करता है उस गेम.
हम स्टोरी के साथ गए। What happened? The AI ran away just like that. Done. यहाँ से हम लोग कल कंटिन्यू करते हैं. So I'm ending my stream here, so I have other works to do. And thank you for being here. And I think you got the points what exactly we want to discuss. And I hope you will go well with the exam part. ठीक है? तो हम लोग कल चेक करेंगे कैसे कंटिन्यू करना है गेम के हिसाब से और एग्जाम के हिसाब से. Till then, we'll see. Yep. Take care, guys. Thank you. Thank you so much. I'm gonna end the stream right now. Thank you so much. So, sir, good night, Yeah. sir. Yes, good night. Good night. Yep. Bye bye. Yep.